सॉल्यूशन चैप्टर की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल्स। देखिए हेनरी लॉज हमें ये कहता है कि कोई भी गैस लिक्विड में कितनी डिसॉल्व होगी, या कहें कि गैस का कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डिसॉल्व होगा, ये डिपेंड करता है कि उस गैस का लिक्विड के सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे हम। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू KH, दैट इज हेनरी कांस्टेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है कि हेनरी लॉज कांस्टेंट डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस इन वाटर इज दिस। द हेनरी लॉज कांस्टेंट वैल्यू KH फॉर ऑक्सीजन इज 4.34 into 10⁻⁻⁴ atmosphere. Second, the temperature is 25 degrees Celsius, or I can say to 98 Kelvin. What is the mole fraction of the oxygen gas? That we have to determine the mole fraction of oxygen gas, O2 gas. Mole fraction of O2 gas we have to calculate. If the partial pressure of oxygen gas is 0.2 atmosphere, so the partial pressure of O2 gas is given 0.2 atmosphere. So we know that according to Henry law, the partial pressure of O2 gas is equal to Henry constant into mole fraction of O2 gas. ये वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट वैल्यू दी है, तो वी हैव टू डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट, दैट विल बिकम इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस। द पार्शियल प्रेशर वैल्यू इज गिवन, दैट इज 0.2 एटमॉस्फेयर, and Henry law's constant value is 4.34 into 10⁻⁴ atmosphere. We will cancel atmosphere from atmosphere. On solving this value, we will find that the mole fraction of O2 gas is equal to 0.046 into 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो इफ ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, सो वी आर हैविंग वाटर एंड इस वाटर से हमने क्या पास की है, सॉरी नाइट्रोजन गैस, वी हैव पास्ड द नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के बबल्स जो है वाटर से हमने पास किए, तो नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। Nitrogen gas bubbled through water at 298 Kelvin. How many millimoles of nitrogen gas? Means number of moles of nitrogen gas हमने निकालने हैं, वो भी मिलीमोल्स में। मोल्स को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वैल्यू विल बिकम मिलीमोल्स। कहता कि नाइट्रोजन गैस वुड बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर दिया हुआ है H2O, इट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 ml और 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर का 1 ml 1 ग्राम के बराबर है। सो वेट ऑफ वाटर कितना, दैट इज 1000 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर वी नो वेरी वेल, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय molecular mass of water. So this will become 1000 by 18 is equal to 55.5 moles. वाटर के मोल्स हमने निकाले 55.5। नेक्स्ट कहते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज 0.987 बार।
The partial pressure of N2 gas is 0.987 bar and KH Henry constant value for nitrogen is 76.48 kilobar. So this one is bar and this one is in kilobar. So पहले बैलेंस कर लेते हैं. KH Henry constant is equal to 76.48 into 10 raised to the power 3 bar. We know that the partial pressure of N2 gas is equal to Henry constant into mole fraction of N2 gas. Partial pressure वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.987 बार इज इक्वल टू KH वैल्यू इज 76.48 इंटू 10 raised to the power 3 बार इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. So 0.987 divided by 76.48 to 10 raised to the power 3, that will be equal to mole fraction of N2. On solving, we will get the mole fraction of N2 is 0.013 into 10 raised to the power minus 3. We know that the mole fraction of N2 is equal to number of moles of N2 divided by number of moles of N2 plus number of moles of water. So मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.013 इंटू 10 raised to the power 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हम निकालना चाह रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वी हैव टू डिटरमाइन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाले दैट इज 55.5. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.5 मल्टीप्लाई बाई 0.013 इंटू 10 raised to the power 3, दैट विल बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा कि दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज 0.729 into 10 raised to the power minus 3 moles, but we have to determine the millimoles, so this value is multiplied by 10 raised to the power 3, so this will become equal to millimoles. So answer is 0.729 millimoles. In next question, the calculate the amount of CO2 gas dissolved. We have to determine that is weight of CO2 gas dissolved. If the at 4 atmosphere means the partial pressure of CO2 gas is 4 atmosphere and weight of water it is our 1 डेकामीटर क्यूब, ये बराबर है 1 लीटर के और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अभी भी किया हमने. द टेम्परेचर इज 298 केल्विन. हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2. KH वैल्यू इज 1.67 किलो बार. So 1.67 kilobar KH, that will become 1.67 into 10 raised to the power 3 bar. Here Henry constant is in bar and pressure of CO2 is in atmosphere. So we know that 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar. So the partial pressure of CO2 gas will become 4 atmosphere की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 1.01325 bar. This will become equal to 4.053 bar. So this is partial pressure of CO2. So we know that the partial pressure of CO2 that will become equal to Henry constant into mole fraction of CO2. The partial pressure of CO2 is 4.053 bar is equal to Henry constant is 1.67 into 10 raised to the power 3 bar multiplied by the mole fraction of CO2. 4.053 divided by 1.67 into 10 raised to the power 3, that will become equal to mole fraction of CO2.
The mole fraction of CO2, on solving this, we will get 2.42 into 10 raised to the power minus 3. This is our mole fraction of CO2. This mole fraction is very small, so number of moles of CO2 will be very small in the solution. We know that the mole fraction of CO2, this will become equal to the number of moles of CO2 divided by number of moles of CO2 plus number of moles of water. Number of moles of water, that is weight of water, divided by molecular mass of water. Weight of water is 1 liter, that is 1000 gram. Molecular mass is 18, so number of moles of water is 55.5. On putting value in this, the mole fraction of CO2, that will become equal to number of moles of CO2 plus 55.5. Because this value is very small, because the mole fraction of CO2 is very small, so number of moles will be small, so this value will become equal to 55.5. Mole fraction of CO2, this will become equal to number of moles of CO2 divided by 55.5. Mole fraction of CO2 is given, that is 2.42 into 10 raised to the power 3. Number of moles of CO2 divided by 55.5, मल्टीप्लाई करेंगे 2.42 into 10 raised to the power minus 3 multiplied by 55.5 is equal to number of moles of CO2. In this case, the number of moles of CO2 will become equal to 0.134. But we have to determine the weight of CO2 or amount of CO2 present in the 1 liter solution. So we know that the number of moles of CO2 will become equal to weight of CO2 divided by the molecular mass of CO2. The molecular mass of CO2 is, number of moles is 0.134 is equal to weight of CO2 that we have to determine. Molecular mass is 44 gram per mole. So 0.134 multiplied by 44, that will become weight of CO2 in gram. On solving this, we will get that the weight of CO2 dissolved is 5.90 gram. 1 liter of water. Given that water is 1 liter. 1 liter water means 1000 gram. And in this case, the number of moles of water will become 55.5. Nitrogen pressure is 1 atmosphere. So pressure of N2 gas is 1 atmosphere. And amount of nitrogen gas dissolved is 0.2 gram. So weight of N2 gas dissolved, that is 0.02 gram. We have to calculate Henry constant for this. So from here we know that the molecular mass of N2, it is our 28 gram per mole. So number of moles of N2, that is weight of N2 divided by molecular mass of N2. The weight is 0.02 and molecular mass is 28. The number of moles of N2 will become equal to 0.00071. These are so small that can be neglected easily. So we know that the partial pressure of N2 will be equal to Henry constant multiplied by the mole fraction of N2. The mole fraction of partial pressure value is 1 atmosphere. KH that we have to determine. Mole fraction of N2 we can determine. Mole fraction of N2 will become equal to number of moles of N2 divided by number of moles of N2 plus number of moles of water. Number of moles of N2 is 0.00071. 0.00071 plus 55.5. So this value is very small, so I can say 0.0071 किसके बराबर है? This value is equal to 55.5. 55.5 mole fraction of N2. On solving this, we will get the mole fraction of N2 is
1.27 into 10 raised to the power minus 5. So we will put this value from here. So 1 is equal to kh multiply by 1.27 into 10 raised to the power 5. So 1 divided by 1.27 into 10 raised to the power minus 5, that will become equal to kh. On solving we will get that the Henry constant value is equal to 7.8 into 10 raised to the power 4 atmosphere.